Let's continue with the definitions and terms. Last time we finished intensive properties. Now we'll start with this heat capacity. So heat capacity is nothing but the heat which is required to increase the temperature of some amount of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. So if I have, let's say, 50 grams of a substance, and if I want to change the temperature of 50 grams of the substance by 1 degree Celsius, so how much heat will I have to supply? That is called the heat capacity. The units of heat capacity are these units: joule per degree Celsius or joule per Kelvin, kilojoule per degree Celsius or kilojoule per Kelvin, calorie per degree Celsius, calorie per Kelvin. CL means calorie. Now, specific heat capacity. So what is the difference between this heat capacity and specific heat capacity? See, heat capacity is the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. But of what? Of some amount. The amount is not defined. It could be 50 grams, it could be 100 grams, it could be 180 grams, it could be 400 grams. So it could be anything. The amount could be anything. And so we are calling it heat capacity. If we say that I'm fixing the amount as 1 gram or 1 kilogram of the substance, then I'll call it specific heat capacity. That means if I want to fix the basis as 1 gram of the substance, so for 1 gram of the substance, how much heat do I have to supply so that the temperature rises by 1 degree Celsius? That is called specific heat capacity, because I am defining it for 1 gram of the substance, or I am defining it for the 1 kilogram of the substance. So specific word means the word specific will tell you that it is with respect to either 1 gram or 1 kilogram. So it is a heat required to increase the temperature of a unit mass. Unit mass means 1 gram or it could be 1 kilogram. Unit mass. So it is the heat required to raise temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. Okay. Now the units will be what? Joule per kilogram Kelvin or joule per gram Kelvin or kilojoule per gram Kelvin, kilojoule per kilogram Kelvin. So everywhere if you see, because of that word specific, per gram or per kilogram has come. So in the denominator you have mass. So these are the different units for specific heat capacity. So if I'm saying that I want to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 gram of a substance, then the heat which is required is called specific heat capacity, because I have already specified that I want to increase temperature only of 1 gram of the substance. So if I
also say that it is that I want to increase the temperature of 1 kilogram of a substance, then also I will say that it is a specific heat capacity. So it is the amount of heat, the amount of energy in the form of heat, which has to be given to 1 kilogram of the substance. When you fix the mass as 1 gram or 1 kilogram of the substance, then call it specific heat capacity. So in the units, if you see, it is per gram and per kilogram. So in the denominator, either gram or kilogram will appear. That is why we are calling it specific heat capacity. Specific heat capacity at constant pressure is small c and then small p. That means you are measuring the heat required to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius, keeping the pressure of the system constant. So if you keep the pressure of the system constant and then measure, it is called specific heat capacity at constant pressure. And similarly, if I keep the volume of the system constant and then measure the heat capacity of 1 gram, it is called specific heat capacity at constant volume, which is denoted by small c and then V as a subscript. Now comes molar heat capacity. Just like here we had specific heat capacity, now we will be using molar heat capacity. Molar heat capacity will be with respect to 1 mole of a substance. Specific was with respect to 1 kilogram or 1 gram. So molar will be with respect to 1 mole of the substance. So it is the heat which is required to raise temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin. So instead of gram or per kilogram, now the unit will be per mole. So this will be the units. Similarly, we can have molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume. So when you are measuring the molar heat capacity, keeping the pressure constant,
It is called molar heat capacity at constant pressure. When you are measuring the molar heat capacity at constant volume, that is by keeping the volume of the system constant, then it is called molar heat capacity at constant volume. Check the notations. Capital C and then small n. This means molar heat capacity. If I write a comma and then write P, that means it is molar heat capacity at constant pressure. And if I write like this, that means it is molar heat capacity at constant volume. Sometimes in place of comma, I can put bracket and write like this also. This also would be the same. The next term, internal energy. So what is internal energy? It is the total of potential as well as kinetic energies of all the molecules present inside the system. So if a system is present, the system is composed of molecules. So the sum total of the energies of the molecules present is called the internal energy of the system. The molecules have potential energies, the molecules have kinetic energies. Now see, the molecules inside anything are continuously in motion. Molecules are always in motion. So they have translational motion, rotational motion, vibrational motion. These are different types of motion of molecules. For example, this is a molecule. The molecule can move like this from here till here. So this is called a translational motion if it has moved from here till here. Now the molecule may also move like this. Let's say from here it will come here. Right? Then it can come here.
It can come here like this, then here, then here. These are the directions of movement of the molecules. Also, a molecule may rotate like this, it may rotate, or like this, it may rotate. So rotational motion is also possible for the molecules. It can rotate like this. So kinetic energy is because of translational motion, rotational motion, vibrational motion. There are three types of motion possible for the molecules. Potential energy of molecules. What is potential energy of molecules? Potential energy is because of the intermolecular forces and the energy which is stored inside the bonds. Whatever energy is stored inside a molecule, that is called potential energy. And also, the force of attraction between any two molecules is also responsible for potential energy. Between any two molecules, there is some force of attraction. So that force of attraction is also generating the potential energy. That means what? The sum total of all the kinetic energies and potential energies is called the internal energy of the entire system or the body. So this is the internal energy. So the internal energy is the total of all the kinetic energies and the potential energies of the molecules present. So you can write like this U. Now the notation for internal energy is U. In some books you will find it as E also. So either you can write U or you can write E. So U is equal to kinetic energy of molecules plus potential energy of molecules.
Higher temperature would mean higher internal energy. Remember this. Higher temperature would mean higher internal energy because the kinetic energy will increase if you increase the temperature. The molecules will start moving faster, and so the kinetic energies of the molecules will increase. So we can say that the internal energy increases with temperature. So higher temperature leads to higher internal energy. Units of U, that is units of internal energy, are joule, kilojoule, and calories. So all these are units of energy, joule, kilojoule, and calories. One calorie is equal to 4.18 joules. You have to know the conversion factor. So this is about internal energy. So it is a sum total, or it is a combination of kinetic energy and potential energy of all the molecules present inside the system. And if temperature increases, the internal energy also increases. Next, let's start with the types of processes. Isothermal process. An isothermal process is a process where temperature is constant. That means throughout the process, the temperature remains constant. So T1 is initial temperature, T2 is the final temperature, T1 is same as T2 in an isothermal process. If we are talking about an ideal gas, then P into V is constant because we know that for an ideal gas, at constant temperature, P1 V1 is equal to P2 V2. For an ideal gas at constant temperature, P1 V1 is equal to P2 V2. So for any ideal gas, if the temperature is constant, we can write this equation, that is P1 V1 is equal to P2 V2. Or you can say that P into V is constant. The product PV is constant. Delta T means T2 minus T1, that is final temperature minus initial temperature. So delta T will be equal to 0 in an isothermal process because final temperature is same as the initial temperature. So T1 is equal to T2 and so delta T is equal to 0.
Next type of process, adiabatic process. Now, in a process, if there is no gain or loss of heat, neither is heat lost nor is heat gained, then we call that process an adiabatic process or diabatic process. So what happens in an adiabatic process? Neither is heat lost nor is heat gained. So between system and surroundings, there is no exchange of heat at all. So we can say that Q is equal to 0 because Q stands for heat. So Q is equal to 0 for any adiabatic process. Q stands for heat. So Q is equal to 0. That means heat is not lost, also heat is not gained. The system will neither lose heat nor gain heat. For an ideal gas undergoing a reversible adiabatic process, this is the relation, that is P into V to the power of gamma is constant. This is a particular formula which is applicable for an ideal gas undergoing a reversible adiabatic process. P stands for pressure, V stands for volume, and that gamma which you see as the exponent of V, this gamma is equal to Cp upon Cv. What is Cp? Molar heat capacity at constant pressure. What is Cv? Molar heat capacity at constant volume. Today we did Cp and Cv. So Cp upon Cv is called gamma. So this ratio of Cp upon Cv is called gamma. So for a reversible adiabatic process, P, that is pressure to the power of pressure multiplied by volume to the power of gamma is constant. So I can say that P1 V1 to the power of gamma is equal to P2 V2 to the power of gamma. I can write this relation for a reversible adiabatic process. For isothermal, what did we write? For isothermal, this is the condition, that is P1 V1 is equal to P2 V2. And for a reversible adiabatic process, this is a condition, that is P1 V1 to the power of gamma is equal to P2 V2 to the power of gamma. What is gamma? Gamma is the ratio of Cp and Cv. So for a reversible adiabatic process, P1 V1 to the power of gamma is equal to P2 V2 to the power of gamma. That gamma exponent is only for the V, not for P. It is not P V whole to the power of gamma. No, it is only P and then V to the power of gamma. It means the volume is raised to gamma. The pressure term is not raised to gamma. Only the volume has the exponent of gamma here. And gamma is Cp upon Cv.
Next type of process, isobaric process. If pressure of system is constant during a process, we call it an isobaric process. Isobaric means what? The pressure should remain the same. So if the pressure of system is constant, we call it an isobaric process. Similarly, for an isochoric process, if volume of system remains constant, it is called isochoric process. So in isobaric, pressure is constant. In isochoric, volume is constant. So in isochoric process, the volume is constant. That means initial volume is same as the final volume. So I can say delta V is equal to 0. What is delta V? V2, that is final volume, minus V1, that is initial volume. So V2 minus V1 is 0, which means that same volume is present. That means the volume of the system is not changing. Next process, polytropic process. Polytropic process is that process which obeys the following equation. That is PV to the power of X is constant. Now see, in adiabatic process, we discussed that P into V to the power of gamma is constant. This gamma is a particular value which is fixed for different sets of gases. Now coming to this PV to the power of X is constant. So this is a general form of polytropic process where X is the power of volume. If X becomes equal to gamma, then we call that process an adiabatic process. Because if X is gamma, that means P into V to the power of gamma is constant. So only when X is equal to gamma, we can call that process an adiabatic process. If X is not equal to gamma, then we will say that the process is a polytropic process. So X is a variable, we don't know what the value of X is. But in case X becomes equal to gamma, then we say that the process is an adiabatic process.
This X is called polytropic index. So if X is equal to gamma, then we say the process is called reversible adiabatic process. Gamma is what? Gamma is mathematically Cp upon Cv. And what is gamma called? Gamma is called adiabatic constant or adiabatic index or Poisson's ratio. These are the three names for gamma. Now, if an ideal gas is subjected to a polytropic process, then we can use this particular formula, the one that I'm putting in a box. This C is called molar heat capacity. Capital C is called molar heat capacity. Cv is molar heat capacity at constant volume. R is gas constant, which is 8.314 joule per mole Kelvin. And X is the polytropic index, that is the exponent of volume. So if they ask you what is the value of the molar heat capacity for an ideal gas undergoing a polytropic process, then you can use this formula and find out. For example, if I have a process like this, P upon V is equal to constant. If there's a process like this, P upon V is equal to constant, then I can say that this is a polytropic process. Why? Because this can be modified and can be written in this manner. P
V to the power of -1 is equal to constant. 1 by V is V to the power of -1. So this is of that form. PV into PV to the power of X is constant. So that means I can say that -1 is the exponent of volume. And so X is equal to -1 because X is nothing but the exponent of V. So P into V to the power of -1 is equal to constant, where this -1 is nothing but the polytropic index. See, X is polytropic index. So the exponent of V is called polytropic index. So if I have this kind of thing, P V to the power of -1 is equal to constant, that means the value of X is -1. So this -1 is nothing but the polytropic index. Next, we will deal with the types of system. There are three types of system. First type is called open system. First type is called open system. Now, what is an open system? An open system is such a system which can exchange both matter as well as energy with its surroundings. For example, if I have a beaker, an open beaker which does not have a lid over it, which does not have any cover over it, and that beaker contains some liquid. It could be water, it could be tea, it could be coffee. So if that beaker is left open without its lid or without any cover on the surface, we can call it an example of open system. Why? Because it Sir, can can you show the definition of open system? easily take energy from the surroundings. It can release energy to the surroundings depending on the temperature differences. And also, since its lid is not present, since it's open on the top, I can pour something into the beaker, and so the mass will change. That means it can exchange matter as well. Also, some amount of liquid can evaporate. So that also means that some matter is being exchanged with the surroundings. So if the molecules start getting evaporated, then they will escape to the atmosphere because there is no lid or cover. And hence we say that this is an example of an open system. Done, sir. So this is an example of an open system. It can exchange matter as well as energy with the surroundings. Next, closed system. A closed system is a system which cannot exchange matter, but it can exchange energy with the surroundings.
So it cannot exchange matter. That means you cannot add a substance. Also, you cannot remove anything from there because it is closed. It's not open. But then this system can exchange energy with the surroundings. That means what? It can lose energy, it can gain energy. So if I have an example, let's say this is an example. Let's try to understand this example, then the definition will be clear. So here I have a cylinder. I have a cylinder. And this cylinder contains gas. As you can see, there are gas molecules inside. These are the gas molecules which are shown present inside the cylinder. Now, there is a piston. There is a piston. This piston is present as a cover on the surface of this gas. That means the piston is covering the top part. But this piston is a movable piston. What do I mean by that? The piston can be pushed downward or it can be lifted. That means it can move down or it can be taken up. So the piston is a movable piston, right? So if the piston is a movable piston, that means the piston can be used to compress the gas if I move the piston downward, or I can lift the piston upward and I can expand the gas. So this is the work of a piston. It can either compress the gas if it comes down, or it can be taken upward, and in that process the gas will expand. So that is one part. Another thing, if you notice here, is that this system has an adiabatic wall. Now, adiabatic wall means what? Adiabatic wall means that the wall is made of an insulating material. The wall is made of an insulating material. What does that mean? That means this wall, which has been made dark black, if you can see the wall here. So this wall is insulating in nature, which means that this wall will not allow heat to leave the system. Also, this wall will not allow heat to enter the system. ना ही हीट बाहर से अंदर आ सकता है गैस की ओर, ना ही हीट अंदर से बाहर जा सकता है सराउंडिंग्स की ओर. This is not permitted. Why is it not permitted? Because the wall is an adiabatic wall. Adiabatic wall का मतलब होता है वो insulating material से बना हुआ है, और अगर वो insulating material से बना हुआ है तो वो हीट को ना ही अंदर से बाहर जाने देगा और ना ही बाहर से अंदर आने देगा. That is an important thing. Now, let's understand why is this an example of a closed system. Let's understand that. See, first of all, let's understand one thing. Its top is covered. So we cannot put anything, we cannot add any substance to this cylinder because its top is covered. Also, we cannot remove any gas molecule from here because its top is covered. ऊपर से पूरा बंद है, piston ने उसको cover करके रखा है. So this piston is acting like a cover or a lid, which means that this is closed from the top. And hence I cannot take anything out of the cylinder. Also, I cannot add anything inside the cylinder. That is the first thing. Next thing is that heat cannot flow inside, heat cannot flow outside either because of the presence of the adiabatic jacket or the wall.
So these are the two things which are important. So heat जो है वो heat बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, heat अंदर से बाहर की ओर भी नहीं जा सकता है. But now the piston is movable, which means that if the piston comes down, the gas is compressed. If the piston moves up, then the gas will expand. Due to the movement of the piston, some work will be done. Some work will be done. Expansion या compression जब होता है तो कुछ work होता है, which we will discuss in detail in the next lecture. But as of now, some work will be done. ये आप समझ गए. When will work be done? When expansion of gas happens or if compression of gas happens. Some amount of work will be done. Now, if work is being done, work is also a form of energy only. That means I can say that energy is being exchanged. That means some energy exchange is taking place. वर्क अगर हो रहा है तो एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. So energy is of two types. This we have done in the last lecture, that energy can be exchanged either in the form of heat or energy can be exchanged in the form of work. For this particular example, heat is not applicable because the wall is adiabatic. So heat का कोई सवाल आता नहीं है इसमें. So no heat is allowed to enter, no heat is allowed to escape. But because of the movement of piston, work is done. If work is done, that means I can say that some amount of energy or some form of energy is definitely being exchanged. तो अगर वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और इसके लिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सिस्टम. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लोज सिस्टम? A system which cannot exchange matter but it can exchange energy with the surroundings is called a closed system. तो ये पूरा जो एग्जांपल है, this example is an example of closed system. Why? Because energy can be exchanged. In what form is being energy exchanged? In the form of work. तो आप ये मत सोचना कि अगर हीट नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. भले ही हीट ना हो बट वर्क अगर हो रहा है तो भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज वर्क के फॉर्म में भी होता है और एनर्जी एक्सचेंज हीट के फॉर्म में भी हो सकता है. इस एग्जांपल में हीट फ्लो जीरो है क्योंकि अडियाबैटिक वॉल यूज किया गया है, तो हीट फ्लो नहीं है, बट वर्क तो है ना, बिकॉज मूवमेंट ऑफ पिस्टन इज कॉजिंग सम वर्क टू बी डन. दैट मींस बिकॉज ऑफ वर्क I will say that energy exchange is happening. So this is the explanation. When the piston moves upward, the gas expands and work is done by the gas. या फिर पिस्टन अगर नीचे जा रहा है तो गैस को कंप्रेस किया जाएगा. So this is an example of a closed system. Now the third type of system, isolated system. An isolated system is what? It can exchange neither mass, that is neither matter, nor energy with the surroundings. अब कोई एनर्जी एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है और कोई मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल, एक क्लोज सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है और अडियाबैटिक वॉल है और अभी कोई पिस्टन नहीं है इसके अंदर. अभी इसके अंदर कोई पिस्टन नहीं है, तो ये वाला है एग्जाम्पल. तो इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो गैस को आप एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉल्यूम पूरा फिक्स्ड है, इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ नहीं है. एंड हेंस दिस इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी. ना ही वर्क हो सकता है ना ही हीट हो सकता है, तो कोई एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है वर्क के फॉर्म में भी और हीट के फॉर्म में भी. और ऊपर से पूरा बंद भी है. And hence I can say that this is an example of an isolated system. जैसे थर्मोस फ्लास्क को अगर आप बंद कर दोगे और उसके अंदर कुछ रख दोगे तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा.
Write down the examples. So a thermos flask which is closed is an example of an isolated system, क्योंकि उसके अंदर तो कोई पिस्टन लगा नहीं है और ऊपर से पूरी तरह से वो बंद रहता है, और बाहर का जो वॉल है, जैकेट है, वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, सो इट कैनॉट लूज हीट और गेन हीट. Okay.
Now the next part. Now we will understand reversible and irreversible processes. तो ये पॉइंट्स है डिस्टिंक्शन के, but let us understand the meaning of this reversible process and irreversible process. So I'll explain the meaning now. So let us take an example. एग्जाम्पल ये है, अगर मैं एक वापस कोई ऐसा सिलेंडर लूं जिसके अंदर गैस पार्टिकल्स है, ओके, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेट्स से दैट आई हैव गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. So here I have gas particles. So here I have gas particles. Now एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और पिस्टन के यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन ए है. So this is position A. This is the initial position of the piston. So this is the initial position of the piston. तो क्या हो रहा है, पिस्टन यहाँ पे है. So इनिशियल जो पोजीशन है पिस्टन का वो है ए पे. तो ऐसा आपका एक सिलेंडर है जहाँ पे सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स रखे हैं, और एक सिलेंडर ऐसा, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. So this is what, this is the piston. This is the piston. And it's a movable piston. अंदर गैस भरा हुआ है. Okay. Now ऐसा समझते हैं कि हम लोग इस गैस को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा. So if I want to compress the gas particles, I'll have to move the piston downward. तो पिस्टन को नीचे लाना पड़ेगा. तो उसको अगर मैं एक बार रिवर्सिबल और एक बार इरिवर्सिबल दो अलग अलग प्रोसेसेस को देखना चाहूं, तो कंप्रेशन कैन बी डन आइदर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली. So either the compression can be reversible or the compression can be irreversible. So let's understand the two different types. One is reversible compression and the other one is irreversible compression. तो अभी पहला मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं इरिवर्सिबल कंप्रेशन का. इरिवर्सिबल. तो क्या करूंगा मैं, अचानक मैंने इस पिस्टन के ऊपर एक बहुत हेवी ऐसा ब्लॉक रख दिया, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो काफी ज्यादा है. दिस इज अ ब्लॉक हैविंग मास m. तो इसका जो मास है काफी ज्यादा है मानो. बिकॉज ऑफ दिस इतना ज्यादा है कि वो पिस्टन को इमीडिएटली एक झटके में ऊपर से नीचे ला देगा. तो यहाँ पे पिस्टन चलाएगा मेरा. So this will be the final position of the piston, which is point B. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पिस्टन के ऊपर मैंने एक बहुत हैवी ब्लॉक रख दिया. उस ब्लॉक को रखने के इमीडिएटली बाद
पिस्टन का पोजीशन ए से बी की ओर चलाएगा. So now this is what I'll have after the piston has come to point B. So that means यहाँ से यहाँ आ गया वो A से B तक, A से B तक. So A से B तक जो आ गया piston, वो क्यों आया? It is because of the external force or the external pressure caused by the heavy block. So ये जो heavy block है, उसकी वजह से piston ऊपर से नीचे एक झटके में आ गया. यानी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाने में, रखा मैंने और मुझे इमीडिएटली उसके बाद दिख गया कि वो नीचे पहुंच गया है बी तक. Now see, if that is the case, I can say that जब वो A से B तक गया, जब पिस्टन A से B तक नीचे मूव किया, तब उस वक्त मैं A से B जब जा रहा था पिस्टन, उस वक्त मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं उसको बीच में रोक सकूं. मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि बीच में मैं उसको रोक सकूं. मतलब बी तक पहुंचने से पहले मैं ये कह दूं कि नहीं, आई वांट टू स्टॉप द मूवमेंट, सो आई डोंट वांट इट टू रीच टिल पॉइंट बी, आई वांट टू स्टॉप इन बिटवीन. तो वो पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज बहुत फास्ट वो ए से बी तक चलाएगा. So I can call this an irreversible compression. Why irreversible? Because A से लेके B तक जब वो पहुंच रहा था, तो उस जर्नी के वक्त I could not stop it or reverse the movement of the piston. सीधा A से B तक पहुंचा, B तक जाके रुक गया, उसके बाद मैं उसको फिर से ऊपर की ओर खींच सकता हूं. लेकिन B तक जब तक वो नहीं पहुंच रहा है, तब तक मैं पिस्टन को स्टॉप नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एक बार ब्लॉक रख दिया तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इमीडिएटली वो ऊपर से नीचे आ जाएगा. So I can say that I have only two distinct points or two distinct positions of the piston. One is the initial state, which is point A, and the other is the final state, which is point B. There is no position of the piston possible between point A and point B, because बीच में उसका कोई रिवर्सल या रुकना पॉसिबल नहीं है. Okay, so such type of compression taking place in a single step due to the constant external pressure is called an irreversible compression. तो हम लोग क्या बोलेंगे? External pressure is constant. The external pressure is constant. External pressure is constant. So irreversible process में क्या होता है? External pressure is constant. Okay, coming to the reversible compression now. अब आते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन. वापस यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है. So again, I have gas particles, and I want to compress now from A to B, but now I want to do it in a reversible manner. अब कैसे करेंगे? वापस इनिशियल पोजीशन जो है पिस्टन का वो A पे है यहाँ पे. So this is A. Now, see how I can do this. मैं अभी ब्लॉक नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे करना है क्या? बहुत धीरे धीरे जाना है. A से B तक मुझे एक झटके में नहीं जाना है. अब A से B तक धीरे 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 मैं पहुंचूंगा, और धीरे धीरे पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा सा ही नीचे आना पड़ेगा A से, फिर उससे वापस थोड़ा सा नीचे, फिर उससे थोड़ा सा नीचे, फिर उससे थोड़ा सा नीचे. ऐसा आते आते थोड़ा 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 करके आते आते मैं A से B तक पहुंचूंगा. So the reversible process is taking place very slowly.
and hence it will take a long time to happen. अब देखो कैसे मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं. अब छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स लेके रखते हैं पिस्टन के ऊपर. अगर सैंड के पार्टिकल्स रखे छोटे छोटे तो सैंड का पार्टिकल का वेट बहुत कम है, तो थोड़ा सा ही वो पिस्टन नीचे आएगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स. यानी ए से थोड़ा सा नीचे आके पिस्टन रुक जाएगा बिकॉज मैंने बहुत कम पार्टिकल्स डाले सैंड के. तो ए से लेके मानो यहां तक आया, इस पॉइंट तक, यहां तक आया मानो. वापस मैंने थोड़े छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स और डाले तो फिर से वो थोड़ा नीचे आएगा और मानो अभी यहां आके रुका पिस्टन. वापस मैंने थोड़े और पार्टिकल्स सैंड के डाले, फिर से थोड़ा नीचे आके पिस्टन यहां रुकेगा. कहने का मतलब क्या है कि जितने मैं सैंड पार्टिकल्स डालता रहूंगा उसके हिसाब से धीरे धीरे पिस्टन नीचे आता जाएगा. अगर मुझे चाहिए कि मैं प्रोसेस को रिवर्स करूं तो मैं वो कर सकता हूं. कैसे कर सकता हूं? मैं कुछ सैंड पार्टिकल्स को हटा दूंगा. मैं कुछ सैंड पार्टिकल्स को हटा दूंगा तो वापस पिस्टन नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएगा. यानी किसी भी पॉइंट पे मेरे लिए पॉसिबल है कि पिस्टन के पोजीशन को मैं रिवर्स कर सकूं. कैसे रिवर्स करूंगा? थोड़े से सैंड पार्टिकल्स हटा के. तो सैंड पार्टिकल्स डालूंगा तो नीचे आ जाएगा पिस्टन, सैंड पार्टिकल्स हटाऊंगा तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा. यानी थोड़े छोटे छोटे वेट्स के ऐड करने से या हटाने से वो पिस्टन ऊपर या नीचे हो सकता है. और ऐसे धीरे धीरे मैं अगर और सैंड पार्टिकल्स डालता जाऊं तो एट द एंड एक ऐसा वक्त आएगा जब वो बी तक पहुंच जाएगा. बहुत धीरे धीरे बट पहुंचेगा ना अल्टीमेटली. इसका मतलब this is a reversible process because at any point of time between A and B it is possible for me to reverse the position of the piston. So A से लेके B तक बहुत धीरे धीरे अगर कोई आएगा पिस्टन तो मतलब वो रिवर्सिबल है. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो उसको टाइम लगेगा होने को बिकॉज ए से बी वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है. But now I will not say that the external pressure is constant. Why? Because हर वक्त हर पोजीशन ऑफ पिस्टन जब बदल रहा है तो मैं अपने सैंड के पार्टिकल्स और थोड़े ऐड कर रहा हूं और थोड़े थोड़े सैंड पार्टिकल्स ऐड करूंगा और फिर सैंड पार्टिकल्स ऐड करूंगा. इसका मतलब जब भी वो पिस्टन रुकेगा मैं फिर से सैंड पार्टिकल्स पिस्टन के ऊपर डाल दूंगा. वापस पिस्टन रुकेगा तो वापस मैं थोड़े सैंड पार्टिकल्स पिस्टन के ऊपर डाल दूंगा. मतलब मैं हर वक्त सैंड के पार्टिकल्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं as a result of which the pressure is changing at every point because the pressure is a result of the sand particles, the weight of the sand particles. तो सैंड पार्टिकल्स का जो वेट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है बिकॉज मैं धीरे धीरे और ज्यादा सैंड पार्टिकल्स डाल रहा हूं. So that means at every point the pressure is changing because the number of sand particles is changing at every point. So during a reversible process, the pressure keeps changing at every point. तो ये होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. अगर आपको कोई ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये होता है ग्राफ्स. अब मैं ग्राफ समझा देता हूं. अगर कोई रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंप्रेशन में क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है. So if I'm talking about a reversible expansion process, the volume will increase. The volume will increase. Expansion हो रहा है तो. अब ग्राफ को देखो. ग्राफ का जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट किया गया है और ग्राफ का जो x एक्सिस है उस पे वॉल्यूम प्लॉट किया गया है. Now from A to B, look at the direction of the arrow.
सो ए से लेके बी तक जो एरो आपको दिख रहा है, दैट एरो इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। मतलब ए से बी तक एरो है, मतलब इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट प्रोसेस का बी है। सो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ए से बी, जो आपको कर्व मैंने बना के दिखाया है, ये कर्व दिखाता है इस कर्व पे जो जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो हर पॉइंट एक एक पिस्टन का पोजीशन दिखाता है। बिकॉज बिटवीन ए एंड बी आई हैव multiple or infinite positions possible for the piston, I will have a curve connecting A and B, और कर्व पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो एक एक पिस्टन के पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जहां पिस्टन आके रुका वो एक पोजीशन उसका, वापस जब पिस्टन आके नीचे रुका तो और एक पोजीशन। वैसे एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा पिस्टन। कंप्रेशन के लिए ऊपर से नीचे दिखाया मैंने आपको। अभी अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब नीचे से ऊपर जाएगा पिस्टन, बिकॉज नाउ द गैस इज एक्सपैंडिंग। तो वैसे ही धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा नीचे से। तो धीरे धीरे जब वो पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है तो हर एक पॉइंट पे जब वो रुक रहा है, वो हर एक पॉइंट पे जहां पे वो रुक रहा है वो पॉइंट डिपिक्ट करता है एक एक पोजीशन ऑफ द पिस्टन, और corresponding to one position, that is corresponding to each and every position of the piston, I can obtain a value of pressure and volume at that point, which I am plotting in this graph. तो अगर आपको कर्व दिख रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच, मतलब वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बिकॉज कर्व पे जो जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि वो पिस्टन के कितने पॉसिबल पोजीशंस है, व्हिच आर इनफाइनाइट बिटवीन ए एंड बी। सो यू गेट अ कंटीन्यूअस कर्व कनेक्टिंग ए एंड बी। एंड ये जो वर्क डन है वो क्या है, वो अंडर द कर्व जो आपको एरिया दिख रहा है, दैट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो ये जो आपको कर्व के नीचे का जो एरिया दिख रहा है V1 से V2 तक, व्हाट इज V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड व्हाट इज V2 द फाइनल वॉल्यूम। सो V1 से V2 तक का जो आपको एरिया दिख रहा है कर्व के नीचे वो वर्क डन है अंडर रिवर्सिबल, फॉर अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन। नाउ कमिंग टू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होगा, ए और बी यही दो पॉइंट्स है, बीच में तो वो पिस्टन रुकता नहीं है, सीधा ऐसे लेके बी तक आके रुकता है। So you cannot have a continuous curve with irreversible expansion. Irreversible प्रोसेस में आप सिर्फ ए और बी यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ही दिखाओगे, बीच में कोई कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते। So this is a curve, I mean this is the nature of irreversible graph. अब अगर वर्क डन पूछा ग्राफिकली तो क्या होगा, चेक द फाइनल प्रेशर व्हिच इज P2, और P2 से आप एक बना लोगे रेक्टेंगल between V1 and V2, यानी between the initial volume and the final volume। वो रेक्टेंगल का जो एरिया दिख रहा है that is the value of work done। तो कैसे निकालेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, जो फाइनल प्रेशर है that is called P2, take that, उसके अलॉन्ग एक रेक्टेंगल बनाओ, और रेक्टेंगल should be between V1 and V2 because V1 is the initial volume and V2 is the final volume। तो V1 और V2 के का रेक्टेंगल जो है आपको बीच में जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, वो रेक्टेंगल का एरिया इज गिविंग यू द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दोनों ग्राफ्स जो थे ये एक्सपेंशन के लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? इन एक्सपेंशन द फाइनल वॉल्यूम इज हायर देन द इनिशियल वॉल्यूम, और आई कैन से V2 इज ग्रेटर देन V1। तो आपको दिख रहा है क्लियरली ग्राफ में कि V2 इज मोर देन V1। Coming to compression, first again reversible compression। अब compression में उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, the final volume will be less than the initial volume, so V2 is going to be less than V1। तो इसके लिए देखो एरो का डायरेक्शन अभी बदल गया है, एरो का डायरेक्शन अभी A से B है, इस तरीके से दिखाया गया है
ताकि जो फाइनल वॉल्यूम है, जो B का वॉल्यूम है, that is V2 which is less than V1, because in compression the final volume is less than the initial volume. So A is the initial point, B is the final point. वापस एक कर्व ड्रॉ किया गया है क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस कर्व के नीचे का जो एरिया है that will give you the value of work done. और अगर इरिवर्सिबल कंप्रेशन हुआ तो वापस कोई कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ ए और बी को दिखाएंगे. ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल स्टेट. एंड वर्क डन के लिए क्या करेंगे, वापस फाइनल प्रेशर को चेक करेंगे. फाइनल प्रेशर इज व्हाट, P2, और फाइनल प्रेशर से रेक्टेंगल बना लेंगे बिटवीन V1 एंड V2. दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल गिव यू द वर्क डन. So these are the graphical representations of irreversible and reversible processes. कंप्रेशन का भी आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंशन का भी आपको पता होना चाहिए. ये है रिवर्सिबल कंप्रेशन, ये है इरिवर्सिबल कंप्रेशन. तो मतलब ये है कि जब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप कर्व नहीं बनाओगे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच में. डोंट ड्रॉ एनी कर्व, बिकॉज you just have two distinct positions of the piston. One is initial and the other one is final. तो बीच में कोई पोजीशन होता नहीं है पिस्टन का, तो आप कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते और बी के बीच. ओके, सो ये मतलब लिखा गया है व्हाट इज P1, व्हाट इज P2, व्हाट इज V1, व्हाट इज V2. Whenever I write 1 as a subscript, 1 मतलब initial value and 2 means the final कलर value. में जैसा ऊपर नीचे. Okay. Expansion में V2 is more than V1 and compression में V2 is less than V1. So for any expansion, the final volume is greater than the initial volume. So V2 is more than V1. And for compression, V2 is less than V1. और अगर आपको वर्क डन पूछा इरिवर्सिबल में तो क्या है, फाइनल प्रेशर को देखो, फाइनल प्रेशर के वहां से लाइन खींचो और रेक्टेंगल बना लो, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल गिव यू द वर्क डन. बट रिवर्सिबल प्रोसेस में, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर वर्क डन निकालना है तो कर्व के जो नीचे का एरिया है वो लेना पड़ेगा. इसके लिए देखो मैंने शेड कर दिया रीजन को, जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला कर्व के नीचे शेड किया हुआ रीजन, तो वो पूरा कर्व के नीचे जो शेड किया हुआ रीजन है दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. यहाँ पे भी ऐसा है, कर्व के नीचे का जो एरिया है शेड किया हुआ, पूरा शेडेड रीजन इज गिविंग यू द वर्क डन. अच्छा, now some important points. ये वाले points. How will we understand by looking at a question whether the process is reversible or irreversible? Because आपको तो ये decision लेना पड़ेगा question solve करते वक्त. You will have to figure out if the process is reversible or irreversible. तो उसके लिए ये points आपको help करेंगे. First point is what? अगर कभी भी आपको question में ऐसा दिखे, a gas is expanding against constant external pressure.
तो मतलब वो irreversible expansion है, because we have learned that in an irreversible process the external pressure is constant. जब भी आपको ऐसा वर्ड दिखे against external pressure or against a constant pressure, that means it is an irreversible expansion. Similarly, अगर आपको कोई ऐसा दिखे कि a gas is being compressed under a constant external pressure, then it is also an example of irreversible compression. So irreversible compression क्या है? Irreversible compression is a compression which takes place due to a constant external pressure. या अगर मानो constant word नहीं भी लिखा question में, but लिखा है under the application of an external pressure. That word external pressure will clearly give you a hint that the compression is an irreversible compression. So ये one or two जो points है, these points will help you understand whether the process is reversible or irreversible. Because every time in the question they will not mention whether it is irreversible or a reversible process. You will have to figure out on your own by using these 2 points which you can see on the screen right now. These are some very important points to decide whether the process is reversible or irreversible. Now, definition of reversible process. This is the definition of the reversible process. A reversible process is a process which can be reversed at any step by causing a slight change in the driving force. Infinitesimally इस वर्ड का मतलब होता है slightly, मतलब थोड़ा सा. तो ये साइंटिफिक टर्म है infinitesimally. Infinitesimally का मतलब क्या है? थोड़ा सा, very little bit, मतलब slightly. So a reversible process is that process which can be reversed, that is whose direction can be reversed by causing a slight change in the driving force. What do I mean by the driving force? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस उस एग्जाम्पल में जाऊं जहां पे ये आपको सैंड पार्टिकल्स में डाल के कंप्रेस कर रहा था गैस को, तो सैंड पार्टिकल्स का जो वेट है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स हियर. सैंड पार्टिकल्स का जो वेट है यानी जो उसका अपना वेट डाल रहा है पिस्टन के ऊपर, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंप्रेशन. So if I change the number of sand particles, I can change the position of piston. That means मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो जो प्रेशर है मैं बहुत थोड़े अमाउंट से चेंज कर रहा हूँ, कुछ ही सैंड पार्टिकल्स में डाल रहा हूँ या हटा रहा हूँ, इसके लिए बोल रहे हैं कि स्लाइट चेंज और इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज. So this is the definition of a reversible process. And what is an irreversible process? An irreversible process is a process which cannot be reversed until and unless the process has been finished, because the process takes place under the circumstance where the external pressure is constant. An irreversible process is a process which cannot be reversed until the process has been completed, because it takes place under a constant external pressure. Sir, can you repeat? Huh? Can you repeat? An irreversible process is a process which cannot be reversed
until the process is completed, because the external pressure is constant and the driving force is much greater than the opposing force. Driving force is much greater than the opposing force. So these are the points of distinction which you can use just for your theory. A reversible process is an ideal process. मतलब वो एक hypothetical case है जहाँ पे आप लोग assume कर रहे हैं कि एक process reversible हो पूरी तरह से. It is not possible to carry out a process perfectly in a reversible manner. And since it's a very slow process, it takes a very long time and it takes place in multiple steps. जैसे धीरे धीरे वो piston नीचे आ रहा है तो बहुत सारे positions आएंगे piston के, तो बहुत सारे steps लग रहे हैं खत्म होने को, यानी A से B तक पहुंचने में बहुत time लग रहा है. So we say that the reversible process takes place in multiple steps, whereas the irreversible process takes place in a single step. Correct? So I will share the PDF and then you can go through this. Yes, I will share the PDF right now.